Now see, this is our next NCERT book word to word explanation clip. I think this is sixth clip. Now the title is 9.9 Dynamic State of Body Constituents Concept of Metabolism. पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है. तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है सर? वेरियस बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उनकी डायनामिक स्टेट का मतलब क्या है सर? दे आर नेवर कांस्टेंट, दे कीप्स ऑन चेंजिंग, सो दे ऑलवेज शो अ टर्न अराउंड, a turnover, and a concept of metabolism. So metabolism is the sum total of anabolic and catabolic reactions in a body or a cell tissue. It's called metabolism. तो ये टाइटल पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि इसमें क्या होगा? तो सर यहाँ शायद है कि हमारे अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बदलते रहते हैं. या तो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बनता होगा जो एक एनाबोलिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंपल बनते होंगे, एनर्जी निकलती होगी जो कि कैटाबोलिक प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है. तो ऐसा ही सब कुछ इस टाइटल में है. और जहां पर आपको ये बोला जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बस आप उतनी एक अंडरलाइन रखिएगा. सो लेट अस स्टार्ट. डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ is that living organisms, may it be simple bacterial cell or a protozoan or a plant or animal, contain thousands of organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain fixed concentration which is expressed as moles per cell or moles per liter. तो अब तक हमने ये सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बहुत सिंपल बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआन सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी हो, उसमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते. इन्हें हम लोग कहते बायोमोलिक्यूल, और उनका एक फिक्स अमाउंट रहता है पर सेल या पर लीटर. तो एखादा एकदम सिंपल बॅक्टेरियल सेल असो, प्रोटोजुआ असो, प्लांट असो किंवा ॲनिमल असो, यांच्यात हजारो ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स असतात. आणि हे कंपाउंड्स किंवा बायोमॉलिक्यूल एका फिक्स अमाउंटमध्ये असतात, जे आपण एक्सप्रेस करतो ॲज मोल्स पर सेल और मोल्स पर लिटर. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वॉज ऑब्झर्वेशन दॅट all these biomolecules have a turnover. So let us underline. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all biomolecules have turnover. That is, they keeps on changing. वो constant नहीं रहते. This means that they are constantly being changed into some other biomolecule. So constantly being changed into some other biomolecules and are also made from some other biomolecules. म्हणजे फर्ज करो कि A plus B is equal to C, which later became D. तो सर, a biomolecule D is converted from C, and the C is obtained after interaction of A and B. So this means that they are constantly being changed in some other biomolecule, जैसे C to D, and are also made from some other biomolecule, जैसे A plus B से कोई C बना होगा. This breaking and making, this breaking and making
is through the chemical reaction constantly occurring in living organism, and together all such making or breaking chemical reactions are called as metabolism. Now, each of the metabolic reaction results in transformation of a biomolecule. A few examples of such metabolic transformations are a removal of carbon dioxide from amino acid, making amino acid into amine. तो देखो, कोई अमीनो एसिड अमाइन बन गया जब उसमें से रिमूव हो गया CO2. So this is what is transformation of amino acid into amine. A removal of NH2 group, amino group, in nucleotide bases, या हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लायकोसिडिक बॉन्ड्स इन सम डायसॅकराइड एटसेट्रा. सो हे सगळे काय आहे? ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहे. We can list tens and thousands of such examples. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation, but are always linked to some other reaction. जैसे मैंने बताया कि भाई C to D बना, तो ऐसे नहीं होता कि C became D. तो शायद A प्लस B से C बना और C से D बना. सो अकेली रिएक्शन नहीं होती. दे आर इन अ चेन, दैट इज कॉल्ड पाथवे. We can list 10 and thousands of such examples. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reaction. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathways. These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. These pathways are either linear or they may be circular. तो हे जे मेटाबॉलिक पाथवे असतात तर ते लिनियर असतात किंवा सर्क्युलर असतात. जैसे आप सोचो कि जैसे ग्लूकोज अ 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर 10 एंजाइमेटिक स्टेप became 2 pyruvic acid, a 3 carbon compound along with formation of 2 ATP, 2 NADH2. So this is linear metabolic pathway. और फर्ज करो कि जैसे एसिटिल कोए 2C, OAA 4C, it forms 6C citric acid, then isocitric acid, then oxalosuccinic acid, then ketoglutaric acid, succinyl CoA, succinic acid, fumaric acid, malic acid, oxaloacetic acid, and oxaloacetic acid except next acetyl group. So the metabolic pathway may be circular, metabolic pathway may be linear also. These metabolic pathways are similar to automobile traffic of a city. The pathway is either linear or circular. These pathways crisscross each other. That is, there is a traffic junction also. मतलब एक तरफ से ये एक कन्वर्शन चल रहा है ऑफ अल्फा इनटू से गैमा, और दूसरी तरफ कोई कन्वर्शन चल रहा है फ्रॉम ए टू सी. तो यहां पे देखो जंक्शन है. These pathway crisscross each other. That is, there are traffic junctions. Flow of metabolite through metabolic pathway has definite rate and direction like automobile traffic. तो जो मेटाबोलाइट्स है अल्फा टू बीटा, बीटा टू डेल्टा, डेल्टा टू गामा, तो इसका एक डेफिनिट रेट भी है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है. दिस मेटाबोलाइट फ्लो इट्स कॉल्ड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. दिस मेटाबोलाइट फ्लो इट्स कॉल्ड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. What is important to note here is that interlinked metabolic traffic is very smooth
and without a single reported mishap for healthy condition. तो हे जे मेटाबॉलिक ट्रॅफिक चालू आहे म्हणजे कॉन्स्टंटली द बायोमॉलिक्युल्स आर चेंजिंग इन टू सम अदर फॉर्म इन अ पाथवे, तो याच्यात कधीच मिसहॅप होत नाही, ते स्मूथ चालते ट्रॅफिक. अनदर फीचर ऑफ मेटाबॉलिक रिॲक्शन इज दॅट एव्हरी केमिकल रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड. देर इज नो अनकैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्शन इन लिविंग सिस्टम. तो लिविंग सिस्टम में कभी अनकैटलाइज रिएक्शन नहीं होती. इवन द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर विच इज अ फिजिकल प्रोसेस is catalyzed reaction in a living system. तो simply carbon dioxide plus H2O, it gives H2CO3, that is carbonic acid. So ये तो physical reaction है, CO2 get dissolved in water. बट अगर यही होता है सेल के अंदर तो यहां पे फिर ये कैटालाइज रिएक्शन होगी, यहां पर्टिकुलर एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स. So, there is no uncatalyzed metabolic reaction in a living system. Even CO2 dissolving in water, which is a physical process, is catalyzed reaction in a living system. The catalyst which hasten the rate of given metabolic conversion are also protein. तो वो तो हम जानते कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स, और एंजाइम्स हमेशा रहते प्रोटीन, एक को छोड़ के, दैट इज राइबोजाइम. These proteins with catalytic power are called enzymes. तो अब हम लोग इसको फाइनली सिर्फ एक बार पढ़ लेते और इसमें हम देखेंगे कि वी हैव गॉट हार्डली 3 अंडरलाइंस. What we have learned till now is that living organisms may be a simple bacterial cell, a protozoan, a plant or animal, contain thousands of organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain fixed concentration expressed as moles per cell, moles per liter. One of the greatest discoveries ever made was observation that all biomolecules have turnover. तो हमारा पहला अंडरलाइन है कि all these biomolecules have a turnover. This means that they are constantly being changed into some other biomolecule and also made from some other biomolecule. This breaking and making is through chemical reaction constantly occurring in the organism. Together, all this chemical reaction of making and breaking is called metabolism. Each of the metabolic reaction results in transformation of biomolecule. Few examples of metabolic transformations are a removal of CO2 from amino acid making it amine, a removal of amino group from nucleotide base, hydrolysis of glycosidic bond in a disaccharide, etc. We can list 10 and thousands of such example. Majority of these metabolic reaction do not occur in isolation, but are always linked to some other. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathways. These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. These pathways are either linear or circular. These pathways also crisscross each other, that is, there are traffic junctions. The flow of metabolite through the metabolic pathway has a definite rate and direction.
This metabolite flow is called dynamic state of the body constituent. What is most important is that interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition. And last, another feature of metabolic reaction is that every chemical reaction is catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. Even carbon dioxide dissolving in water, which is a physical process, is a catalyzed reaction in a system, in a living system. The catalyst hastens a rate of the given metabolic reaction, which are chemically proteins. These protein with catalytic power are called enzymes. तो ये हमने पढ़ा डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. अब हमारा अगला टाइटल 9.10. मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग. तो देखो यहां पर क्या दिया है. लिविंग कंडीशन के लिए मेटाबॉलिक ये बेसिस है, माने देयर मस्ट बी एनाबोलिज्म, दैट इज सिंपलर सब्सटेंसेस शुड कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी. म्हणजे दोन प्रकारचे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस असतात, एनाबॉलिक, कॅटाबॉलिक. सिंपल प्लस एनर्जी गिव्स कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स गिव्स सिंपल प्लस एनर्जी इज लिबरेटेड. दिस प्रोसेस इज अ डिस्ट्रक्टिव कैटाबोलिक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. ये अब इसमें दिया है, देखो अब. सो metabolic pathways can lead to more complex structure from simple structure. For example, acetic acid became cholesterol, so simple to complex, or lead to simpler structure from complex structure. For example, glucose became lactic acid in our skeletal muscle. So, metabolic pathway can lead to a more complex substances from simpler substances. जैसे कि acetic acid change to cholesterol, simple to complex, or lead to simpler structure from complex one. For example, glucose is broken down into lactic acid in a skeletal muscle. The former case, that is conversion of acetic acid into cholesterol, is called biosynthetic pathway or anabolic pathway, and the latter, matlab ki glucose is broken down into lactic acid, the latter constitute degradation and hence called catabolic pathway. Anabolic pathway, as expected, consume energy. Assembly of protein from amino acid require energy input. तो जैसे कि कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, सो दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, असेंबली ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन. तो यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनने को लगेगी एनर्जी. सो assembly of protein from amino acid require energy input. On other hand, catabolic pathway lead to release of energy. For example, when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, the energy is liberated. अब देखो
हमारी जो लिविंग सिस्टम रहती उसमें एक खूबी रहती, एक खासियत रहती कि जब भी कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ा जाएगा इनटू सिंपलर वन तो डेफिनेटली निकलेगी एनर्जी. सो ब्रोकन डाउन of complex into simpler with release of energy is a catabolic pathway. So the living system know to trap this released energy and store it into the chemical bonds of ATP. म्हणजे सर एखादी लिव्हिंग सिस्टम म्हणजे आपल्या सेलमध्ये जर एखादी कॅटाबोलिक प्रोसेस झाली आणि कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स ब्रेक होऊन जर सिम्पलर बनले आणि एनर्जी निघाली तर ते एनर्जी अपन ट्रैप करतो आणि स्टोर करतो एटीपीच्या बॉन्ड्समध्ये और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब उसको तोड़ा जाएगा इनटू एडीपी प्लस आईपी और जो एनर्जी निकलेगी इट इज यूज्ड वेरियसली टू डू द डिफरेंट वर्क्स. अब जरा ध्यान दो, ये सब यहां पर दिया है. Assembly of protein from amino acid require energy input because it is anabolic process. On the other hand, catabolic pathway lead to release of energy. For example, when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, the energy is released. This metabolic pathway from glucose to lactic acid, which occur in 10 metabolic step, is called glycolysis. तो सर हम तो जानते कि ग्लूकोज इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड. फर्स्ट द ग्लूकोज इन 10 enzymatic step is broken down into pyruvic acid and later on when pyruvic acid is subjected to reduction it forms a lactic acid. So anyway, this metabolic pathway from glucose to lactic acid which occur in 10 metabolic step is glycolysis. Living organisms have learned to trap this energy liberated during degradation and store it in form of chemical bond. As and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic, mechanical work. जेव्हा जेव्हा गरज पडेल, as and when needed, the bond energy is used for biosynthetic म्हणजे anabolic process, osmotic work माने osmoregulation, chemical work that is moment like. The most important form of energy currency in living system is the bond energy in chemical called adenosine triphosphate. So how do living organisms derive their energy? So oxidation of the complex organic substance. What are the strategies they have evolved? Aerobic respiration, anaerobic respiration. How do they store the energy and in what form? So ATP. How do they convert this energy into work? ATP is broken down into ADP plus IP and liberated energy is used. You will study and understand all this under the subdiscipline bioenergetics in later your higher classes. तो अब ये हमको एक बार रिवाइज करना है पूरा और फिर हम लोग आगे जाएंगे. तो सी our title was metabolic basis of living. Metabolic pathway can lead to more complex organic molecule from simple molecule. For example, acetic acid became cholesterol, or lead to a simple molecule from complex molecule. For example, glucose became lactic acid in skeletal muscle. The former case, that is conversion of acetic acid to cholesterol, is called biosynthetic or anabolic pathway. The latter, that is breaking of glucose into lactic acid in skeletal muscle, constitute degradation and hence called catabolic pathway. Anabolic pathway as expected consume energy.
Example, assembly of protein from amino acid require energy input. On the other hand, catabolic pathway lead to release of energy. For example, when glucose is degraded into 2-pyruvic acid and then into lactic acid in skeletal muscle, energy is released. This metabolic pathway from glucose to pyruvic acid and then lactic acid, which occurs in 10 enzymatic steps, it's called glycolysis. Living organisms have evolved or learned to trap the released energy during degradation and store it in form of chemical bond. And as and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic or mechanical work that we perform. The most important form of the energy currency in living system is bond energy in a chemical called adenosine triphosphate. So how do the living organism derive their energy? So after respiration, what strategies they have evolved? So if they are aerobic, aerobic respiration. If they are anaerobic respiration. How do they store the energy, in which form? So they trap the energy and store in chemical bonds of ATP. How do they convert this energy into work? So as and when needed, the ATP is broken down or hydrolyzed into ATP plus IP and the liberated energy is used to do the work. You will study and understand all this under sub-discipline called bioenergetics in higher classes. Now, the next important title, 9.11, is the living state. अब देखो यहां पर क्या दिया है, आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ. यहां पर बोला है कि देखो लिविंग सेल, टिश्यू, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, इनमें जो बायोमोलिक्यूल रहते उनका एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन रहता. मतलब कि अगर ग्लूकोज की बात करें तो इट इज 4.2 मिलियन मॉलिक्यूल टू 4.6 मिलियन मॉलिक्यूल पर लीटर. पर अगर हार्मोन की बात करें तो वो नैनोमीटर में रहता, वो नैनोग्राम्स में रहता पर ml. और हमेशा ये कोशिश होती है कि बायोमोलिक्यूल की अमाउंट फिक्स रखी जाए. इसे कहा गया है स्टेडी स्टेट. म्हणजे ना ग्लुकोज वाढू द्यायचं ना कमी होऊ द्यायचं, ना हार्मोनची लेवल वाढू द्यायची न कमी होऊ द्यायची. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट, ऐसा यहां बोला है. अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि सारी फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, सेटल होने की तरफ जाती है. पर आप जानते फिजिक्स का नियम है कि व्हेन द कंडीशंस आर एट इक्विलिब्रियम दे डू नॉट फंक्शन, दे डू नॉट वर्क. तो अगर हमारे अंदर ऐसा हुआ कि इफ अवर केमिकल रिएक्शंस रीचेस टू इक्विलिब्रियम सो दैट विल बी अ डेथ. तो सर फिर कोशिश क्या होनी चाहिए? Every effort is made so that the equilibrium state will never occur. So sir, steady state काय को बोलते? Steady state का मतलब एक बैलेंस रखना, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बैलेंस रखना, और वो हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम रहती, तब जाके वो स्टेट लिविंग बनती. अब देखो, it's very simple title actually. The living state. At this level, you must understand that tens and thousands of chemical compounds in living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are present at a concentration
characteristic of each of them. At this level, you must understand that tens and thousands of chemical compounds present in living organism, and these chemical compounds are also called metabolites or biomolecule, are present at a fixed concentration for that particular substance. For example, blood concentration of glucose in normal healthy individual is 4.2 million to 6.1 million मॉलिक्यूल पर लिटर. म्हणजे एका लिटरमध्ये ब्लडमध्ये 4.2 मिलियन म्हणजे 42 लाख ते 6.1 मिलियन माने 61 लाख, 42 लाख से 61 लाख मिलियन, 42 लाख से 61 लाख molecules of glucose रहते per liter. That is its fixed amount. So for example, the blood concentration of glucose is in the normal healthy individual is 4.2 million molecule to 6.1 million molecule per liter, while that of hormone would be in nanogram per ml. The most important fact of biological system is that all living organism exist in a steady state. आता ही तुमची अंडरलाइन आहे. So the underline is most important fact of biological system is that all organisms, living organism exist in steady state characterized by fixed concentration of each of these biomolecule. मतलब जितना चाहिए उतना ही ग्लूकोज रहेगा, जितना चाहिए उतने ही हार्मोन रहेंगे. These biomolecules are in a metabolic flux, माने influx outflux. Any chemical or physical process moves spontaneously towards equilibrium. तो कोणती केमिकल प्रोसेस असो किंवा फिजिकल प्रोसेस असो ती आपोआप स्पॉन्टेनियसली माने यूं ही किस तरफ जाती है? इक्विलिब्रियम की तरफ. जैसे पानी ऊपर से नीचे तक आता, बट जब उसकी लेवल आ जाती तो वो शांत हो जाता. सो एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम. द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम. आता हे तुम्ही लक्षात ठेवा की फिक्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इज स्टेडी स्टेट, आणि स्टेडी स्टेट the steady state is non-equilibrium state. फिर हमने अंडरलाइन किया था कि in all living organism they exist in steady state characterized by fixed concentration. steady state कशी असते? नॉन इक्विलिब्रियम. का? कारण इक्विलिब्रियमला वर्क डन होत नसते म्हणून. One should remember from physics that system at equilibrium cannot perform the work, and as living organism work continuously they cannot afford to reach equilibrium. त्यांना इक्विलिब्रियमला जाना शक्य नहीं. अब यहां देखो उसने कितना बोल्ड करके दिया, क्योंकि द थिंग इज सो इंपॉर्टेंट, दे नो इट. हेंस लिविंग स्टेट म्हणजे स्टेडी स्टेट is non-equilibrium steady state to be able to do the work. Living processes म्हणजे metabolic processes, construction and destruction, making and breaking is a constant effort for what? To prevent falling into equilibrium, and this is achieved by energy input. Metabolism provide mechanism for production of energy. तो अब इसे समझो कि जीवित रहना है तो सर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट चाहिए, और ऐसी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट चाहिए तो
तो सर उसके लिए कांस्टेंट एफर्ट्स लेने पड़ते टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम, और वो तो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इट्स एक्चुअली अ मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एक बार क्या एनर्जी मिल गई कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो सकती। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। सर लिविंग स्टेट म्हणजे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट आणि मेटाबॉलिज्म हे काय आहे, सिनोनिमस. विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट. अब हम इसको वापस एक बार पढ़ने वाले हैं. देखो, at this level the title is living state. At this level you must understand that tens and thousands of the biomolecules in living organism are present at the fixed concentration characteristic for them. For example, the blood concentration of glucose in a healthy individual is 4.2 million molecule to 6.1 million molecule per liter, and that of hormone would be nanograms per ml. The most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characteristic by concentration of each of these biomolecule. These biomolecules are in metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously towards equilibrium. The steady state is but at non-equilibrium. One should remember from physics that the systems at equilibrium cannot do anything, and as the living organism have to work constantly, they cannot afford to reach equilibrium. Hence, the living state is non-equilibrium steady state able to perform the work. Living processes is a constant effort to prevent falling into equilibrium. This is achieved by energy input, and where from the energy will come? By metabolism. So metabolism provide a mechanism for production of energy, and hence living state and metabolism are synonymous. Without metabolism there cannot be a living state. And now your most important title and rewarding title is enzyme. So that I will talk in a next clip. Thank you.